मानुएल की कहानी। फिर मिलिए मानुएल से, एक 50 वर्षीय पुरुष जिन्हें रक्त संचार और वेनस की समस्याएं थीं। बाएं तरफ सोने का परिवर्तन उनके डॉक्टर की सलाह पर हुआ। इस बदलाव के बाद मानुएल ने अपने पैरों में सूजन में काफी कमी देखी और रक्त संचार में सुधार हुआ। यहां तक कि उनके डॉक्टर भी उनके प्रगति से प्रभावित थे। व्यक्तिगत चिंतन। ये कहानियां कुछ शारीरिक लाभों से आगे बढ़कर भावनात्मक और मानसिक प्रभाव को उजागर करती है। अपने सोने की दिनचर्या में एक जागरूक परिवर्तन करके हम अपनी सेहत पर अधिक नियंत्रण और स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए एक नवीनीकृत कल्याण और अपने शरीर के साथ गहरा संबंध महसूस किया। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर शरीर अनोखा होता है और जो किसी के लिए काम करता है वह दूसरों के लिए न कर सके। फिर भी ये व्यक्तिगत अनुभव यह दर्शाते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव हमारे कल्याण में बड़े सुधार ला सकते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव। अब जब हमने बाएं तरफ सोने के लाभों की समीक्षा की है और प्रेरणादायक व्यक्तिगत कहानियां सुनी हैं, तो यह समय है यह सीखने का कि इस आदत को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल करें। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव और रात के रूटीन दिए गए हैं जो आपको शुरू करने में मदद करेंगे। धीरे धीरे शुरू करें। अगर आप बाएं तरफ सोने के आदी नहीं हैं, तो छोटे समय के लिए इसे शुरू करें। इस तरफ लेटें और रात के दौरान स्वाभाविक रूप से घूमने की अनुमति दें। अगर जरूरत हो तो तकिए का इस्तेमाल करें। एक पीछे की ओर या अपने घुटनों के बीच रखें ताकि आपका शरीर स्थिति में बना रहे। परिवर्तन को आरामदायक बनाएं। सोने से ठीक पहले भोजन करने से बचें। पाचन प्रक्रिया को आसान बनाने और बाएं तरफ सोने को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे पहले रात का खाना खाने की कोशिश करें। सोने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम अंधेरा, शांत और ठंडा हो। सोने के लिए सही माहौल नींद की गुणवत्ता में बड़ा अंतर ला सकता है। रात के रूटीन और जैन अभ्यास। रात से पहले ताजगी भरा जैन ध्यान। बिस्तर पर जाने से पहले कुछ मिनट ध्यान लगाने के लिए समय निकालें। यह सिर्फ चुपचाप बैठना और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना हो सकता है। ध्यान मन को शांत करने और शरीर को गहरी और आरामदायक नींद के लिए तैयार करने में मदद करता है। सोने से पहले आभार व्यक्त करें। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सकारात्मक अभ्यास आपके मूड को बेहतर बना सकता है और चिंता को कम कर सकता है। हल्का पढ़ना। कुछ प्रेरणादायक या शांतिदायक पढ़ना आपके मस्तिष्क को सोने से पहले आराम देने में मदद कर सकता है। ऐसी विषय वस्तु चुनें जो शांति और सुकून को प्रोत्साहित करें। हल्की स्ट्रेचिंग या शाम की योगा। हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या नरम योगा अभ्यास करने से आपके मांसपेशियों को आराम मिलेगा और शरीर को आराम के लिए तैयार किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से बचें। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन के संपर्क को कम करें। उपकरणों से नीली रोशनी आपकी प्राकृतिक नींद चक्र को बाधित कर सकती है। शांत और व्यवस्थित वातावरण। अपने बेडरूम की सफाई और शांतता बनाए रखें। एक सुव्यवस्थित और शांत स्थान आपके मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और नींद में आसानी कर सकता है। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल बाएं तरफ सोने के लिए आदी हो जाएंगे, बल्कि अपनी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे। याद रखें, बाएं तरफ सोने की ओर जीवन शैली में बदलाव एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। क्या आप अपने दिमाग को बदलने और अपनी असली संभावनाओं को उजागर करने के लिए तैयार हैं? वीडियो के विवरण में आप हमारे ई बुक का लिंक पाएंगे, जहां
आप अपने मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने और एक नए स्तर की भलाई और सफलता प्राप्त करने के लिए आजमाए गए तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। इस अनोखे अवसर को हाथ से जाने न दें, अपना जीवन बदलें और आज ही अपनी मानसिक शक्तियों को जगाने की यात्रा शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करना न भूलें ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियो न चूकें। अच्छी नींद लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। En résumé, dans le bouddhisme zen, le sommeil est une pratique spirituelle aussi précieuse que la méditation assise. Dormir sur le côté gauche devient plus qu'une simple position de repos. C'est une manière d'aligner le corps et l'esprit avec un chemin plus large vers l'équilibre et l'illumination. La science derrière dormir sur le côté gauche. Plongeons maintenant dans le monde fascinant de la science pour comprendre pourquoi dormir sur le côté gauche peut être si bénéfique. Cette pratique, qui peut sembler simple à première vue, a des effets profonds sur notre physiologie. Santé cardiaque. Dormir sur le côté gauche bénéficie au fonctionnement du cœur. La gravité aide le cœur à pomper le sang plus efficacement, facilitant la circulation sanguine dans tout le corps. Cela est dû à l'orientation naturelle de notre cœur et de notre système circulatoire, optimisant son fonctionnement pendant les heures de repos. Système digestif. La gravité joue également un rôle crucial dans la digestion. En dormant sur le côté gauche, l'estomac et le pancréas s'alignent naturellement, facilitant la digestion. Les aliments passent plus facilement de l'estomac à l'intestin grêle, et cette position aide à prévenir le reflux acide et l'indigestion, rendant notre sommeil plus agréable et ininterrompu. Système lymphatique. Dormir sur le côté gauche soutient le système lymphatique, qui se draine vers la gauche. Cette position favorise l'élimination efficace des toxines, des liquides et autres déchets, permettant au corps d'effectuer son processus de nettoyage nocturne de manière plus efficace. Comparaison avec d'autres positions. Comparé à d'autres positions de sommeil, dormir sur le côté gauche offre des avantages significatifs. Dormir sur le côté droit peut exercer une pression sur l'estomac et les organes digestifs, aggravant potentiellement le reflux et les problèmes de digestion. Dormir sur le dos peut être préjudiciable pour ceux qui souffrent d'apnée du sommeil ou de ronflement, car cette position peut entraîner le blocage des voies respiratoires par la langue. Enfin, dormir sur le ventre entraîne souvent des douleurs au cou et au dos en raison de la position non naturelle de la colonne vertébrale. Bien que chaque personne soit unique et puisse avoir des besoins de sommeil spécifiques, les preuves scientifiques suggèrent que dormir sur le côté gauche pourrait être l'option la plus bénéfique pour la majorité des individus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de la liker. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu comme celui-ci. Merci. Les bénéfices physiques de dormir sur le côté gauche. Examinons plus en détail les bénéfices physiques spécifiques de dormir sur le côté gauche. Amélioration de la digestion. Comme mentionné précédemment, dormir sur le côté gauche peut considérablement améliorer la digestion. Notre estomac et notre pancréas sont naturellement inclinés vers la gauche, ce qui permet à ces organes de fonctionner de manière optimale. Cette position aide l'estomac à traiter les aliments plus efficacement et assure un passage fluide des aliments vers l'intestin grêle aidé par la gravité. Elle aide également à prévenir les brûlures d'estomac et le reflux gastro-œsophagien, maintenant l'acide gastrique en place et réduisant le risque d'inconfort et de dommages à long terme. Circulation sanguine et santé cardiaque. Dormir sur le côté gauche affecte positivement notre santé cardiovasculaire.
Cette position favorise la circulation sanguine vers le cœur en réduisant la pression sur la veine cave inférieure, la veine qui transporte le sang de la moitié inférieure du corps vers le cœur. De plus, pour les femmes enceintes, dormir sur le côté gauche améliore la circulation vers l'utérus, le fœtus et les reins, et aide à soulager la pression sur le dos, bénéficiant à la fois à la mère et au développement du bébé. Soutien au système lymphatique. Comme mentionné précédemment, dormir sur le côté gauche améliore la capacité du système lymphatique à éliminer les déchets et les toxines du corps. En facilitant le drainage lymphatique vers le conduit thoracique du côté gauche, cette position soutient le processus naturel de détoxification pendant la nuit. En résumé, dormir sur le côté gauche est plus qu'une position confortable. C'est une manière de soutenir plusieurs systèmes corporels, d'améliorer la santé digestive et cardiovasculaire et de promouvoir une détoxification efficace. Ces bénéfices soutenus par la science montrent que quelque chose d'aussi simple que de changer de côté pour dormir peut avoir un impact profond et positif sur notre santé globale. Témoignages personnels et expériences. Écoutons maintenant quelques histoires personnelles de personnes qui ont modifié leurs habitudes de sommeil en passant à dormir sur le côté gauche et comment cela a influencé leur vie. L'histoire de Laura. Voici Laura, une enseignante de 35 ans qui souffrait de digestion lente et de brûlures d'estomac fréquentes. Après avoir découvert les bienfaits de dormir sur le côté gauche, elle a décidé d'essayer. Au début, c'était un peu inconfortable, car elle avait l'habitude de dormir sur le dos. Cependant, après quelques semaines, elle a constaté une amélioration notable. Sa digestion est devenue plus efficace et les épisodes de brûlure d'estomac ont disparu. Laura a partagé qu'elle se sent plus reposée le matin et que sa qualité de vie générale s'est améliorée. L'histoire de Manuel. Ensuite, il y a Manuel, un homme de 50 ans souffrant de problèmes de circulation et de varices. Passer à dormir sur le côté gauche était une recommandation de son médecin. Après avoir effectué ce changement, Manuel a remarqué une diminution significative de l'enflure dans ses jambes et une amélioration de sa circulation. Même son médecin a été impressionné par les progrès réalisés. Réflexion personnelle. Ces histoires mettent en lumière quelque chose au-delà des bienfaits physiques, l'impact émotionnel et mental. En apportant un changement conscient à nos routines de sommeil, nous pouvons nous sentir plus autonomes et en contrôle de notre santé. Beaucoup de personnes ayant partagé leurs expériences ont mentionné un renouveau du bien-être et une connexion plus profonde avec leur corps. Il est important de se rappeler que chaque corps est unique et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Cependant, ces expériences personnelles offrent des perspectives précieuses sur la manière dont de petits ajustements dans notre quotidien peuvent conduire à des améliorations significatives de notre bien-être. Conseils pratiques pour intégrer cette habitude. Maintenant que nous avons exploré les avantages de dormir sur le côté gauche et entendu des histoires inspirantes, il est temps d'apprendre comment intégrer cette habitude dans votre vie quotidienne. Voici quelques conseils pratiques et routines nocturnes pour vous aider à démarrer. 1. Commencez graduellement. Si vous n'êtes pas habitué à dormir sur le côté gauche, commencez par le faire pendant de courtes périodes. Allongez-vous sur ce côté et laissez-vous tourner naturellement durant la nuit. Si nécessaire, utilisez des oreillers. Placez-en un derrière votre dos ou entre vos genoux pour aider à maintenir votre corps en position. 2. Rendre la transition confortable. Évitez de manger juste avant de vous coucher. Essayez de dîner au moins 2 heures avant d'aller dormir pour faciliter la digestion et rendre le sommeil sur le côté gauche plus confortable.
3. Créez un environnement propice au sommeil. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et fraîche. Un environnement de sommeil adéquat peut faire une grande différence dans la qualité de votre repos. 4. Routine nocturne et pratique zen, méditation, zen restauratrice. Avant de dormir, consacrez quelques minutes à la méditation avant de vous coucher. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir en silence et d'observer votre respiration. La méditation aide à calmer l'esprit et prépare votre corps à un sommeil profond et réparateur. Pratique de la gratitude. Avant de dormir, réfléchissez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique positive peut améliorer votre humeur et réduire l'anxiété. Lecture légère. Lire quelque chose d'inspirant ou de calmant peut aider à détendre votre esprit avant de dormir. Optez pour des thèmes qui encouragent la paix et la sérénité. Étirements doux ou yoga du soir. Effectuer des étirements légers ou des exercices de yoga doux peut aider à détendre vos muscles et préparer votre corps au repos. Évitez les écrans électroniques. Réduisez l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. La lumière bleue des appareils peut perturber votre cycle de sommeil naturel. Environnement calme et rangé. Gardez votre chambre propre et sereine. Un espace ordonné et paisible peut influencer positivement votre état mental et favoriser l'endormissement. Intégrer ces habitudes vous aidera non seulement à vous habituer à dormir sur le côté gauche, mais aussi à améliorer la qualité générale de votre sommeil. Rappelez-vous, adopter un mode de vie orienté vers le côté gauche est un processus progressif qui demande patience et persévérance. Êtes-vous prêt à transformer votre esprit et à libérer votre véritable potentiel? Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers notre e-book où vous apprendrez des techniques éprouvées pour libérer vos capacités mentales et atteindre un nouveau niveau de bien-être et de succès. Profitez de cette opportunité unique pour transformer votre vie et commencer votre voyage vers l'éveil de vos pouvoirs mentaux dès aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dormez bien et prenez soin de votre santé.